Now, Pakistan is a rogue state, but many in our country still want to give them a long rope. Congress's Navjot Singh Sidhu cannot stop singing praises for his bada bhai. But today, Times Now is exposing yet another face of Pakistan that knows only to exploit and prey on innocents. Times Now spoke to a former Khalistan leader who is now in exile in London. He blows the lid off the farce that Pakistani groups like SFJ peddle in the name of the Khalistan cause. Jaswant Singh, in an exclusive interview, reveals how Gurpatwant Singh Pannun is only a gun for hire and is only parroting a Pakistan script. जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान में तो हमारे इकट्ठे 100 500 आदमी जो बॉर्डर क्रॉस करते थे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती थी इंडिया गवर्नमेंट को, वो वहां बॉर्डर पर मार दिए जाते थे। पाकिस्तान कभी सिखों का हमदर्द नहीं है, ना रहेगा, ना पहले हुआ है। वो कभी नहीं खालिस्तान की मदद कर सकता। जे वो खालिस्तान की मदद करता तो जो सिख उधर गए हैं उनको क्यों नहीं पॉलिटिकल असाइलम दी, क्यों नहीं उनको पॉलिटिकल असाइलम का पासपोर्ट दिया? उनके पास कोई रेजिडेंस परमिट भी नहीं है। इसलिए वो ये लड़ाई से 40 साल सिखों के सिर के ऊपर से निकाल लिए हिंदुस्तान के दुश्मनी करके। सिख जो अच्छे आदमी हैं उनको मालूम हो गया है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, मित्र नहीं। 1947 के बाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार ने 2 वकाफ बोर्ड बना दिए, एक शिया वकाफ बोर्ड, एक सुन्नी वकाफ बोर्ड। पाकिस्तान में जितने मंदिर थे, जितने गुरुद्वारे थे, उन्होंने एक भी वकाफ बोर्ड ना हिंदुओं का बनाया ना उन्होंने सिखों का बनाया, और खुद मालिक बन के बैठ गए और आज तक अरबों रुपये खा रहे हैं उन प्रॉपर्टियों का। और इनकी जेब में सिगरेट होती है और एक गुरुद्वारे की स्टेज में बैठते हैं। और जो खालिस्तानी होते हैं कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई आप स्टेज पे नहीं बैठ सकते। ये सिखों का बेनिफिट नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं। पाकिस्तानी इस्लामिक जितने मौलवी हैं उधर, वो जो मुसलमान नहीं है उनके लिए वो सभी काफिर हैं। सिख भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, क्रिश्चियन भी काफिर हैं। जो इस्लाम को नहीं मानता वो सभी को वो काफिर बोलते हैं। तो क्यों मुसलमान काफिरों की सपोर्ट करें? वो तो इंडिया के साथ लड़ाई का एक बहाना है सिखों को आगे करके सिखों से मदद लेने के लिए। वो मदद सिखों की नहीं करता, सिखों से लेता है। रिपब्लिक डे के ठीक पहले गुरपटवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो निकाला है ये बोल के कि कश्मीरी जो आतंकवादी हैं उनको खालिस्तानियों के साथ मिल करके रिपब्लिक डे को रोकना चाहिए। क्या ऐसी कभी कोऑपरेशन हो सकता है? क्या है इसके पीछे का प्लान? कभी नहीं हो सकता। कश्मीर पार्ट ऑफ पंजाब, कश्मीर हमारा है ना कि पाकिस्तान का, और कश्मीर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। और पतवंत सिंह पन्नू को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ये पन्नू जो है ही इज नॉट ए सिख, उसको मालूम ही नहीं है कि कश्मीर पार्ट ऑफ पंजाब था, आगे भी रहेगा। और ये जो पाकिस्तान के कहने पर ये जो कह रहा है ये जस्ट एक कमाई का साधन है, इनका इनकम सोर्सेज है और कुछ नहीं। कौन है ये गुरपटवंत सिंह पन्नू और क्या है सिख्स फॉर जस्टिस और उसका मकसद क्या है? वो कहते हैं वो खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। वो कभी भी खालिस्तान के लिए नहीं लड़ सकते, ना लड़े हैं। वो सिर्फ लोगों को वर्गला रहे हैं और उनका मकसद पैसा बनाना है, ना कि खालिस्तान। वो लोगों को उकसा रहे हैं इंडिया में। कभी कहते हैं $2 लाख देंगे, लाल किले के ऊपर झंडा लहराओ। कभी किसी को कहते हैं
$1,00,000 देंगे, इसको कोई पूछे तेरे पास पैसा कहाँ है, घर तो अभी आपने फंड इकट्ठा करके लिया आपने, ये आदमी कुछ भी नहीं है। इसलिए एक को कोई खालिस्तान को नहीं, खालिस्तान नौजवानों को मरवाना चाहता है। रिपब्लिक डे को डिसरप्ट करने की ये बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? पैसा आता है, स्टेटमेंट दो। इधर एक पहले हमारा भी आदमी था मनमोहन सिंह, वो कहते थे 5 पाउंड लेता था एक खालिस्तान का नारा मारने के लिए। ऐसे वो पैसे देते हैं, फिर नारे मंगाओ, मारो, रेफरेंडम कराओ। कि कश्मीर का रेफरेंडम हो गया? यूएनओ से पास करा के आए थे, रेफरेंडम हो गया? वर्ल्ड का कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी देश की सरकार के बगैर रेफरेंडम कराया जा सके। और पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आती, ये रेफरेंडम करा कैसे सकता है, इसके पास कौन सी पावर है? ये इलीगल बोलता है, इलीगल काम करता है, पैसे कमाने के लिए काम करता है। और ये बहुत सिखों को पता चल चुका है कि ये सिर्फ अपनी कमाई का जरिया बना रहा है और कुछ नहीं है। All right, let's go across to Padmaja, who's joining us for more on the story. Padmaja, you spoke exclusively to this individual who has been a Khalistan leader. He has received training in Pakistan as well. And look at the kind of statement that he's making as far as SFJ, just literally calling them a rubber stamp or a front of Pakistan. And those who are, in fact, leading SFJ are those who don't believe in the Sikh cause in any manner and certainly are misleading youth. Absolutely, Madhav. In fact, very, very important points that Jaswant Singh was making over there, and a couple of things that I want to again recap. The things that, and the reason why Jaswant Singh is important is because he in fact was one of the original founders of the Dal Khalsa. He is also somebody who had raised the demand for a separate Khalistan in the 80s. Subsequently, he also went to Pakistan close to a dozen times. Now, what is important is that he says that while in Pakistan, he realized that the Pakistani agencies have absolutely no interest in the welfare of Sikhs alone, and this was brought home to him when he saw the condition of Sikhs in Pakistan, where as a minority they were not even afforded the basic rights. In fact, an important thing that he says is that while they encouraged us to take up arms against India for the so-called cause of Khalistan, they used to call us kafirs to our face, because anyone who doesn't belong, who is not a co-religionist, is a kafir for them, and they can never expect us to have the same rights. That's point number one. Point number two, he says that Gurpatwant Singh Pannun is expressly on the role of Khalistan, and the reason that Jaswant Singh had to stay in exile is because earlier, when he realized what is actually happening in the name of Khalistan, that it's basically Pakistan's agenda to try and create disquiet in the country, he said, we do not want the youth of our country to be misled, to be killed in this fashion. And when he became an enemy of the agencies, Madhav, is when there is an attempt on his life and he was shot at. There was an attempt to kill him. And that is how the entire Khalistan plot has unraveled. Jaswant Singh, even now, stays in exile, stays in the UK, but he is somebody who's first-hand seen how the entire so-called cause. This, he says, is nothing more than paid propaganda. Earlier in the 80s, there were still locals, there were youth who were misled by a certain ideology, by a desire for a homeland of their own, by a separate country. But people like Pannu have got absolutely no ideological mooring. They are actually paid per campaign. So every tweet storm, every campaign that they unleash, including the one that they are aiming at for Republic Day tomorrow, they are paid per campaign in pounds. All right, Padmaja, stay with us because I want to also open this up, take this across to our guest joining us live. We have with us Major General G.D. Bakshi, defense analyst, who's with us. Jaswant Singh, author, is also joining us on the broadcast. We also have with us Anil Sareen, chief spokesperson of the Punjab BJP. Dushyant Nagar is also with us, a political analyst. Let me come across to you first, Major General G.D. Bakshi, and let me begin by asking you, no surprises really in a manner in terms of what the role or the designs of Pakistan are. But even all those who seem to be taking up the cause of
Khalistan, the fact that they are supported by Pakistan, the links are there for all to see, and they've all been exposed completely in this interview that we have done with this individual who's based in London now. Absolutely. You know, the simple fact is that one of the worst kept secrets in South Asia is the ISI, Pakistan ISI K2 plan. The K2 plan, that design is to somehow reinforce the terrorist movement in Kashmir and reignite the terrorist movement in Punjab via the Khalistan angle. That is their famous K2 plot. They have been at it for almost a decade now, over a decade in fact. You know, they first flooded the Punjab with drugs because there was nobody who was aligning himself with the Khalistani ideology anymore. People had suffered a lot in the decade of the 80s. They had had more than their fill of this terrorist movement, this mindless, idiotic terrorist movement which caused nothing but pain and suffering in the Punjab, and a lot of criminal elements joined, and under the name of that banner of that terrorist movement, they were raping, they were looting, they were murdering in the Punjab. So that reign of terror was brought to an end by 1990. Now Pakistan has been desperately trying to revive it. First they did it by spreading drugs on a massive scale in the Punjab. Right. The province from where we used to get the maximum recruits for the armed forces, today they can't pass their tests, physical tests. They have been destroyed by these. Okay. You see, and what I want to say is Jaswant Singh is one of the few a number of people in the Punjab have woken up to the designs of the ISI. They have realized they are being used. General Bakshi, please stay with us. I also want to quickly open this up and take this across to other guests who are with us. Dushan, अगर पाकिस्तान का रोल तो क्लियरली साबित होता ही है, ये एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और अब क्लियरली एक्सपोज कर रहे हैं एसएफजे जैसे ग्रुप्स को। जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल रहता है, इस तरह भारत में टेरर फैलाने की प्रयास क्या किए जाते हैं, तब भी हम देखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लीडर्स, मेन स्ट्रीम लीडर्स जिनको इंपॉर्टेंट रोल्स दिए गए कांग्रेस पार्टी में, और वो अपने बड़ा भाई को बार बार इन्वोक करते हैं। और तो और कैप्टन अमरिंदर ने भी कुछ दिन पहले कहा कि जब उन्हें निकाला गया था कैबिनेट से, तब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया था, सिफारिश हुई थी उनकी। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए ये बात सब जानते हैं, सर्वविदित है कि पाकिस्तान हमारे देश में अस्थिरता फैलाने के लिए कार्य करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए एक वैश्विक मुहिम चलाई, जो वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी है। दूसरा क्या है, इन प्रतिबंधित ग्रुप्स को जो विदेशों में रह रहे हैं, इनको लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन कौन से कार्य किए, ये जवाब इनको देना होगा। दूसरा, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने ये न्यूज पढ़ने से पहले ये नहीं सोचा कि अमरिंदर सिंह ने कितना बड़ा झूठ बोला था। जब उनको कैबिनेट से निकाला गया तब तो इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री ही नहीं थे। तो चुनावी फायदे के लिए इस प्रकार से ऊंची बात करना ठीक नहीं है। चुनावी फायदे के लिए बातें की जा रही है। आई वांट अ रिस्पांस फ्रॉम बीजेपी टू दैट। अनिल सरीन, चुनावी फायदे के लिए बातें की जा रही है। दुष्यंत नागर जी, इससे चुनाव का क्या लेना देना, आई डोंट नो, बट लेट द बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिस्पॉन्ड। अनिल सरीन, अमरिंदर सिंह झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। जवाब देने दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता को भी जवाब देने दीजिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम इस नेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर भी खालिस्तान सपोर्टर्स को उनकी कही हुई बात को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर डागर। जहां तक आप लोग कर रहे हैं भाई साहब, जी ने जो कुछ भी कहा देते हैं ऐसे लोगों को। ऑल राइट, दुष्यंत नागर, लेट हिम स्पीक। नहीं, ये कैसे कह देंगे? नहीं, कैसे बोला इन्होंने? हमने किसको सपोर्ट किया? प्लीज लिसन टू मी। क्या बात कर रहे हैं? कितने लोगों को खोया है? सर नवजोत सिंह सिद्धू पे क्या एक्शन लिया गया है? दुष्यंत नागर, आप बता सकते हैं क्या हमारे नवजोत सिंह सिद्धू पे क्या एक्शन लिया गया है? आप एक बात बताइए प्लीज। मुख्यमंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, देश के महान सपूत थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। आप बात करते हैं। ओके, दुष्यंत नागर, अब जवाब भी सुन लीजिए। यस, अनिल सरीन लड़ते हुए कौन? Anil Sarin, please come in now. Dushyan Nagar, let Anil Sarin speak now. Anil Sarin, अगर हौसला रखिए सुनने का, रखिए ना, डर क्यों रहे हैं? सुनने की सीखी है।
Everybody knows in Punjab who brought militancy, who brought Bhindranwala. Everybody knows about it. I don't want to go to that back in the history. Let us talk about what Jaswant Singh is saying. How Sikhs are being treated in Pakistan. Pakistan is using all these people, these hardliners, just for keeping India in trouble. भारत को मुश्किल किससे आ रही है? प्रॉब्लम कहां से आ रही है? केवल पाकिस्तान से. अब उसका मैनुअल जो सिस्टम था वो नहीं चल रहा, तो ड्रोन से रोज हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही है. क्या आप इसका समर्थन करेंगे? क्या नवजोत सिंह सिद्धू रोज ये कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई इमरान है और इमरान उसका समर्थन करता है? क्या आप उसको समर्थन करेंगे? एक बात को समझ लीजिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाबी कोई भी हो, वो किसी भी कीमत के ऊपर पाकिस्तान के ये मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा. और ये सिख फॉर जस्टिस का जो बात कर रहे हैं, Sikh for justice, just पैसे के लिए ये कर रहे हैं. I'm going to request you to hold on to your thoughts. That's exactly the point that is being made over here. In fact, by Jaswant Singh, I'm going to request Arison Singh also to please stay with us. Let's listen to another chunk of this interview that Jaswant Singh has given to Padmaja Joshi. Let's listen to what he has to say of the role of Pakistan. जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान में, तो हमारे इकट्ठे 100 500 आदमी जो बॉर्डर क्रॉस करते थे, पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती थी इंडिया गवर्नमेंट को, वो वहां बॉर्डर पर मार दिए जाते थे. पाकिस्तान कभी सिखों का हमदर्द नहीं है, ना रहेगा, ना पहले हुआ है. वो कभी नहीं खालिस्तान की मदद कर सकता. जे वो खालिस्तान की मदद करता तो जो सिख उधर गए हैं उनको क्यों नहीं पॉलिटिकल असाइलम दी? क्यों नहीं उनको पॉलिटिकल असाइलम का पासपोर्ट दिया? उनके पास कोई रेजिडेंस परमिट भी नहीं है. इसलिए वो ये लड़ाई से 40 साल सिखों के सिर के ऊपर से निकाल लिए हिंदुस्तान के दुश्मनी करके. सिख जो अच्छे आदमी हैं उनको मालूम हो गया है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, मित्र नहीं. 1947 के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने 2 वकाफ बोर्ड बना दिए, एक शिया वकाफ बोर्ड, एक सुन्नी वकाफ बोर्ड. पाकिस्तान में जितने मंदिर थे, जितने गुरुद्वारे थे, उन्होंने एक भी वकाफ बोर्ड ना हिंदुओं का बनाया, ना उन्होंने सिखों का बनाया, और खुद मालिक बन के बैठ गए और आज तक अरबों रुपये खा रहे हैं उन प्राप्तियों का. और इनकी जेब में सिगरेट होती है और एक गुरुद्वारे की स्टेज में बैठते हैं. और जो खालिस्तानी होते हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई आप स्टेज पे नहीं बैठ सकते. ये सिखों का बेनिफिट नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं. पाकिस्तानी इस्लामिक जितने मौलवी हैं उधर, वो जो मुसलमान नहीं है उनके लिए वो सभी काफिर हैं. सिख भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, क्रिश्चियन भी काफिर हैं. जो इस्लाम को नहीं मानता वो सभी को वो काफिर बोलते हैं. तो क्यों मुसलमान काफिरों की सपोर्ट करें? वो तो इंडिया के साथ लड़ाई का एक बहाना है, सिखों को आगे करके सिखों से मदद लेने के लिए. वो मदद सिखों की नहीं करता, सिखों से लेता है. All right, Arison Singh is also with us. Arison Singh, what is very evident is the kind of experience that this person has had all his life. He is an individual who has also been attacked in London, is in fact living far away from his home, only because he has spoken out against Pakistan and very clearly describes how they have even cheated those who are Sikhs and all minorities, in fact, being mistreated and continue to be mistreated in Pakistan. No, after so many years, they even attacked General Bulbul Barar just few years back in London. It has to be a handiwork of the ISI. It cannot be Khalistanis alone. So there are two facets to this whole Khalistani problem. That is, one is the Western facet and the other is the Pak ISI facet. And let me tell you that Khalistan, the ideology of Khalistan has not come directly from Pakistan, but from Pakistan to Western countries and then back into Punjab. Now, this was the time when,
during the Cold War period when the US and its allies were smarting, under the defeat of Pakistan by India, and then they started this Khalistan movement in a big way. And yes, we have had a large chunk in our within our country, which was always very enamored. They could even swim across the English Channel to find a place in a shelter, or a shelter in UK or France or anywhere. I mean, they could go to any extent. They were exploited. Now the geopolitics has changed. Pakistan is no longer in a position to to sustain it. But we have to tighten the screws on these Western countries. After all, I hearing these interviews, and I can tell you that none of these fellows are gainfully employed anywhere in the Western countries. They are just being exploited, right, financed by the Pakistan ISI, and but the geopolitics is changing. The geopolitics has changed, and it is better that people like Trudeau. I just hate the sight of this man. Okay. People like Trudeau are brought to task. Right. People like him are no. We have to slip into a quick break, sir. In fact, we'll have to leave it there for the moment. I'd like to thank all of you for joining us. Major General G.D. Bakshi, Jaswant Singh, Anil Sarin and Dushan Nagar. Clearly a big revelation coming in from this individual who has seen from very close quarters what Pakistan is capable of. Slipping into a quick break for now.